Hi friends. I am Juhi. Welcome to the channel Bollywood King. Here in this channel I usually react to different interesting Shahrukh Khan videos. Today I am going to watch Shahrukh Khan and Juhi Chawla's interview about their movie. It is from 2000. I hope you will enjoy the video. Let's start without losing any time. Gentlemen, our guest tonight are superstar Shahrukh Khan and Juhi Chawla. Our guest on M&S tonight is the heartthrob of millions of Indians and undoubtedly the Badshah of the box office, jinka dil hai Hindustani. Ladies and gentlemen, please welcome superstar Shahrukh Khan. हम लोगों को समझ सके तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसे भी हो अपनी यही कहानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. Shahrukh, thank you so much for coming on our show. Thank you for calling us here. You know, we dare to wear black. Yeah, the only thing I'm glad I've not worn the blue tie. Otherwise, doesn't matter. You know, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे रूसी ही रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. You've done this ad which says I dare to wear black. Yeah. कितने ads कर लिए तुमने? वो फिल्में ज़्यादा हुई हैं, ads ज़्यादा हुई? Right now the Guinness Book of World Records working on it to find out. Wish you all the best. Thank you. Well, let me congratulate you on this your debut venture, Phir Bhi Dil Hai Hindustani. How do you feel about it? I mean, you started off with television and you broke the biggest myth of them all, that from television cannot create and produce film actors. I think you're the biggest of them all. Let's clap for that. Thank you so much. And it's ironical, ये विडंबना है कि सबसे बड़ा जो फिल्म स्टार है, सुपरस्टार है, वो टेलीविजन से निकला. How do you relate to television now? Of course, I'll be very warm and friendly, and I have some amazing memories of television. But what I have memories of is the fact that I believe that an actor can act anywhere. Whether it's when I started with street theatre, I've done stage with Barry John, and then television, and now films. And as all the critics say, I still haven't changed my style of acting. I still do the same thing. So it's no. I don't think it was. I think it's just not even a myth. It's just that people didn't try. Or people, didn't give credit enough to television. Yeah, but why is the tendency to kind of look down upon television? I think now with Shahrukh making it from television, I think it's a matter of great pride for all of us that there is no checkpoint Charlie between films and television. What matters is the role. I believe there never should have been, actually, and that's why I just came, and I had nothing to lose. I just had to act, and that's what I've been doing. I think anyone from television, anywhere, if they just want to act, they just go ahead and do it. And the clock has come full circle now that you play a television journalist in your film. Yes, I did. How did you think of that? We were really thinking that television has made amazing inroads into India, and there's such an influx of media vis-a-vis television, and so many programs, and we go for press conferences, and there used to be a time when I had started off Fauji, and we had this one little camera, and it was like the greatest piece of equipment one could see, and suddenly now you go for interviews, and there are hundreds of cameras, and there's such a media influx, and we thought to make a film and to make it modern and sort of relevant in today's time, Phir Bhi Dil Hai Hindustani, we thought we should have a backdrop which is about television, and Aziz Mirza, the director, also is a television director, so to say, and Juhi is the only outsider, but we said, okay, we'll give her a chance in television this time. Great. But did you ever imagine that there's some section of people who might not relate to this phenomenon called television journalist? Yes. ऐसा हुआ फिल्म रिलीज के बाद ऐसा कहीं लगा कि बहुत लोगों ने समझा नहीं कि ये क्या है? नहीं, एक्चुअली हमने उसको बहुत सिंपल रखा हुआ है कि एक हीरो जब हीरोइन से मिलता है तो उनका झगड़ा होता है. अभी वो कॉलेज में भी होता है, जंगल में भी होता है, जू में भी होता है. तो वी हैव डिसाइडेड कि इस बार हम टेलीविजन के बैकड्रॉप में हीरो हीरोइन को मिलाएंगे और उनका झगड़ा होगा. तो वी हैव नॉट गॉन इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ हाउ द टेलीविजन थिंग इज मेड. देयर इज अ पोर्शन इन द फिल्म जहां पर हमने सोचा था कि टेलीविजन का जो एक हाउ डू यू एयर इट, उसको बहुत टेक्निकल करेंगे. लेकिन उसको हमने बहुत सिंपल रखा है. उसमें सिर्फ हम फिल्म में बोलते हैं वीडियो को डालो टेप उसके अंदर, वीडियो का रिकॉर्डर में, और उसको प्ले करो वो प्ले करते हैं और वो आ जाता है. वी केप्ट दैट सिंपल. सो बट दे माइट बी नॉर्मली हिंदी फिल्म हीरोज आर काम नहीं करते हैं और कोई पता नहीं होता कहाँ से कभी कुछ पता नहीं चलता है वो करते क्या कभी बताते नहीं. कभी माँ बाप के बारे में नहीं बताते, बस कुछ नहीं बताते हैं, बट वो होते हैं, लगे रहते हैं. तो ज्यादा हो गया तो कॉलेज में पढ़ते हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करते. तो इस बार हमने सोचा कि एक उसको हम प्रोफेशन दे देंगे व्हिच इज प्रोफेशनल, एंड आई होप पीपल अंडरस्टैंड. अच्छा, बट डू यू थिंक यू शुड बी अरेस्टेड बिकॉज यू डूइंग समथिंग वेरी इलीगल, बिकॉज यू ट्राइंग टू कमिट सुसाइड? बिकॉज हिंदुस्तान में सुसाइड इलीगल हो कहीं भी पूरे विश्व में, और सुसाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. ट्रेन के नीचे आदमी कट के मरता है, छत से कूद के मरता है, पानी में डूब के मरता है, फांसी का फंदा लगाता है, ये हिंदी फिल्म का प्रोड्यूसर बन जाता है.
Shahrukh Khan started his production company for the first time with Aziz Mirza in 1999. It was called Dreams Unlimited. So, do you think it's suicidal? It's harakiri, what? नहीं ऐसा when I like a lot of people said, like you just began the program and said कि television से फिल्मों में हीरो नहीं बनते, तो जिन producers ने मुझको sign किया तो वो भी काफी suicidal थे और आज बड़े खुशी से घूम रहे हैं, हरे भरे उनकी life है सारी और बहुत अच्छा है उनका. And then people even told me when I came, I remember my first producer telling me कि इसको hero मत बनाओ, his hair is like a bear. He told me, this was GP Sippy साहब, he used to always say your hair is like a bear. And then a lot of people said I speak too fast. And then a lot of people said that I'm all wrong when I did negative roles. And ये तो बिल्कुल गलत है, hero negative role नहीं करता. And for me, for 9 years, being in films has been every year or every saying me, this is not right, this is wrong. Most of the time it has... I think all the time they have been wrong. It has been, for me it's been fortunate that it has been right. And I thought, let's take the biggest risk of them all this time. Really go to the top of the building and try and jump from there and survive. Good. We'll clap with that because I think it's such a wonderful effort. और मेरे ख्याल से आदमी जो शुरुआत करता है, जो पायनियर होता है, उसको ये सब तकलीफें झेलनी पड़ती हैं. अब मेरे ख्याल से बहुत सारे एक्टर्स जागे हैं, उनको भी प्रोड्यूसर बनना है. I think it is important, all actors who are doing well, मुझसे हमारी कंपनी का जो, I'm not plugging it here, but... No, plug it. Okay, plug it, okay. Dreams Unlimited. Plug, yes. Yes. हमारा जो लोगो है उसमें normally lines होता है, we'll take you there, or company stands for truth and stuff like that. Our company's logo was Dreams Unlimited, and why not? And why not? Yes. And why not? So when anyone tells me why a producer, actually answer is why not? And if I don't do it, who's supposed to have done very well in Hindi films, who's supposed to be owing his last 10 years of his life, that is a major section of my life, to films, becoming a superstar, and as everyone claims, earning a lot of money, and having the greatest benefits in life because of being a film actor. If I don't take a chance, who will? And if I do it, then others should follow it. And it's important, I think. Definitely. Well, I'm going to ask you a question which is not related to what we were talking. We're talking about superstardom, we're talking about success. ये जो बंगलो आपने लिया है, इस पे आपकी निगाहें पहली दफा कब गई थी? Did you ever think that you were crossing, going to Sea Rock or somewhere else, that one day, like the show in films, कि एक दिन मैं इसे खरीदूंगा? Actually, strangely, when I came to Bombay first time, I was not being looked after. I didn't know anyone in Bombay. And one day, when you get angry, and I just stood on Marine Drive and I said, one day I'm going to own the city. And the strange thing is, बड़े फिल्मी स्टाइल के अंदर, तब मैं young था, stupid था, silly था, so I had these things कि I will own the city. And strangely, the dream came true, but it's the other way around. I feel the city owns me now, you know, because it's given me everything. It's like, to me, a surrogate mother. I come from a different city, and people say कि you can't make it big if you don't happen to be a film producer's son. And there's a lot of struggle. और लोग, मेरे को एक लड़के ने बताया था जब मैं एक सीरियल कर रहा था, उम्मीद, कि मेरा दोस्त है वो कॉकरोचेस खाने लग गया था, इतना पागल हो गया था वो फिल्मों में हीरो बनने के चक्कर में. So I heard stories like this, and वो सड़क पे सोते हैं और ये. So nothing happened to me. I was really embraced with open arms. And the house that you talk about, whoever I meet in Bombay, सब ऐसा बोलते हैं कि यार जब भी हम यहाँ से क्रॉस करते थे हम सोचते थे ये घर लेंगे. And mine is quite accidental actually. It wasn't that I'd gone to buy that house. There's a building which is coming up behind that house, and I wanted to book a flat in that. And I asked the gentleman that how long would it take? He says about 3 years. And I said, what are you going to do with this house? He said, ये इसको ऑफिस बना देंगे, क्योंकि इसको हम तोड़ नहीं सकते, ये archaeological department के अंदर है. So I said, if you don't mind, can I take this? So he said, okay, take it. And everybody like sort of again turned around and said, this is a wrong investment. And all my friends turned around and said, this is not to be done. And I just took it because the bathrooms are big in it. ये तो वही हुआ कि जो इंसान अपनी गाड़ी पार्क करना चाहता था वहां गया, पार्किंग स्पेस नहीं बोला, पूरी बिल्डिंग ही खरीद लो. ऐसे ही है भैया. ऐसे ही कुछ. But you say that city owns you, but I think it's the other way around. शाहरुख की सिटी में आप जहां जाइए उनके ही पोस्टर लगे हुए हैं. Shahrukh is doing something. Shahrukh.com, Shahrukh Hotmail, Shahrukh फिर भी दिल है हिंदुस्तान. It's Shahrukh all the way. So I think you own the city as much as the city owns you. मैं तो बिक चुका हूँ actually. मैं क्या खरीदूंगा किसी को? But I. So see, that's what I meant. When you become a producer, you have these bitter memories, experience cropping up now and then, and you regret it. And I says, मैं तो बिक चुका हूँ. Is it because it's got anything to do with the fact that you become a producer? No, I personally feel. I mean, I don't look like it, but I think finally I am completely a commodity now. I mean, everyone tells me that. कई बार लोग मुझसे मिलते हैं, hi Shahrukh brand, instead of saying Shahrukh Khan. So it's become a situation like this where anything that needs to be sold, here is a face which has hair like a bear, and which was not meant to make it big, and I've made it, and I don't mind selling anything. But did you ever think that you make it so big? कभी उस दिशा में सोचा था
मुझे ऐसा बनना है या जो जैसा होता जाएगा ऐसा होता लोग जाएगा। मुझको बोलते हैं मैं बहुत पॉम्पस हूँ, लेकिन मुझको अभी भी नहीं लगता कि मैं बड़ा स्टार बनाऊँ. रियली आई रियली नीड टू गेट बिगर. And it's not greed, it's just that I cannot keep an end in sight. Like ऐसा है कि आदमी पहाड़ चढ़ता है तो फिर वो ऐसा वर्कआउट करता है कि मैं शुरू में थोड़ा आहिस्ता चढ़ूंगा, हाफ वे थ्रू में रेस्ट करूंगा, फिर एंड के वक्त बहुत तेज चढ़ूंगा. And my logic is once I reach there, then what? What do I do after that? Do I stop working? Do I stop acting? Do I stop selling things? Do I stop being on hoardings? Do I stop owning Bombay? If that happens, then मैं करूँगा क्या? मैं बंगले में बैठ के सिर्फ बाथरूम में तो नहीं घूम सकता. So I just decided that I should just for me it is the process. कि मैं बस चढ़ता जाऊँ and they should know they should be no end. I should just keep climbing. That's all. It's not, Climb unlimited. just keep on climbing unlimited. Really, the dreams have to be like that. They have to be unlimited. You can't decide tonight that I'll sleep and dream of pretty girls. I'm sure you do that. But you'll just you have to dream of. I'll dream of pretty girls today and then tomorrow and day after and for the rest of my life. But did you make Shahrukh Khan hasn't changed a bit, guys. He has the same persona, same wit, same madness then and now. Maybe a little mature now. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी with any specific idea in head or a message for the audience? When you say फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो बाकी चीजें क्या हैं? You know, like the normal patriotic films that one has seen, I think times are changing. I may be completely wrong. We'll get to know in another about 3-4 weeks after the full monies come from the release of the film. So far, it's okay. We are safe. What I wanted to feel was कि हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा देश महान है, जो है, और उठो चलो और अपना धोती पहन लो और अपना खादी पहन लो और डांडी मार्च के लिए चलो. My father was a freedom fighter. I've been brought up in that atmosphere. But my father never told me that this was the way to be patriotic. He said, do your thing, do your job, whatever you're working at, be good at it. But there has to be a feeling of genuine nationalism, genuine patriotism. And कहीं पर भी ऐसा बोलते रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम बेस्ट हैं, हम बेहतर हैं. हालांकि मैं खुद अपने आप को ऐसा बोलता रहता हूँ. But the whole logic was कि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी. And थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी. अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचें तुमको चीज पुरानी. So the whole logic is we are like that. But what the hell? The heart is Indian, and that is beautiful. Thank you. Shahrukh, we'll take a short break, and I'd like to specifically ask you: is the message which you're saying, "फिर भी दिल is Hindustani"? Do you feel that the film has passed the muster? Is the message reaching across and to the people you wanted to? Yeah, I'm hoping. I'm hoping, and I'm. So I'd suggest what you have your coffee. And you think about the answer. You'll be joined by your okay. business partner and your co-star, Okay. the glamorous Juhi Chawla. We'll take a short break. We'll be back in a moment to chat some more with Shahrukh. Thanks. And it's time now, ladies and gentlemen, to welcome our next guest, the dreamy partner of Dreams Unlimited. Right, Shahrukh? The extremely gorgeous Juhi Chawla. She's hot. She's flying high. And she's so deadly. I'm the best. You are the best. I'm the best. I'm the best. I'm the best. You are the best. I'm the best. I'm the best. I'm the best. You are the best. I'm the best. Okay, you heard that song, Juhi. I'm the best. I'm the best. तुम्हें क्या लगता है ये किसके लिए बजाया गया? तुम्हारे लिए या शाहरुख के लिए? आप बताइए. No, it was for Juhi only. I think it's we only play this song for Juhi. आपको बुरा नहीं लगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगा. I'm a big fat liar. नहीं, पर बुरा लगता है डेफिनेटली. अभी मेरे ख्याल से उनको ऐसा लगता है कि हमने किसी को बहुत चढ़ाया है तो हमें उसको उतारने का भी हक है, वजह हो न हो. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितने भी लोग लिखते हैं हीरो हीरोइंस के बारे में, आई थिंक वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लिखते हैं और फिर ज्यादा ही बुरा भी लिखते हैं. आई थिंक दे नेवर राइट अबाउट अ पर्सन रियली, बट दैट इज व्हाट द जॉब इज. यू डू मेक इट लार्जर देन लाइफ और इन बोथ वेज. पर उनको दूसरों की जिंदगी से इतनी तकलीफ क्यों होती है? शाहरुख खान दूसरी शादियों में जाके नाचता है तो तुम अपने घर में नाचो, तुम बाहर जाके नाचो, उसको नाचने से क्यों रोक रहे हो? अगर वो ऐड करता है, एंडोर्समेंट करता है, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जब सुबह के लोग ऐसे जो तपस्या करते हैं और जो पूजा करते हैं, कहते हैं भगवान मुझे मेरा दुख तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, शाहरुख खान का सुख बर्दाश्त नहीं होता. मेरा ये प्रॉब्लम He made a good point. This a good description of hatred against Shahrukh Khan.
पता है आपको ये बाथरूम के साइज का प्रॉब्लम जितना बड़ा बाथरूम होता है आदमी का उतना लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बाथरूम ज्यादा बड़ा हो गया तो लोग वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शाहरुख वहाँ क्यों नाचा भाई, क्यों नाचा, उसको नाचने दो, उसको नाचने की इच्छा तो और आदमी बारात में नहीं नाचेगा तो नाचेगा। अपनी शादी में बुलाओ मुझको यार, मैं आके नाचूंगा। उनके जिनको बुरा लगता है उनकी शादी में, आई एम श्योर अगर उनको चांस मिले मैं उनकी शादी में आके नाचूं तो कहेंगे अरे यार प्लीज उसको जल्दी से बुला। हाँ, उसके लिए वो कुछ भी करने होता है 100%, बट आई विल टेक मनी फॉर इट, ऐसे कुछ भी। But how you're dealing with all this? I mean, what do you think about the film? और जो इन्होंने प्रेस वालों ने फोर्थ स्टेट ने जो कहा, how you grappling with it? लोगों कुछ what do you want to tell people? Do you want to tell people something? Actually, now क्योंकि कुछ लोग हैं पढ़ के बहक जाते हैं, पढ़ लिया बुरा बोले कि और वो ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, because these people sincerely feel that they can brainwash you into thinking the way they want you to. But you know what's worked in our favor is also that now everybody started realizing that there is a message in the film. There is something entertaining about it. There is something refreshing and new about it. Songs are fantastic. Shahrukh is the best. Shahrukh, you've been to theaters? Yeah, I have been. Yeah, I've been to. फिल्म देखने के लिए? हाँ। मतलब को दाढ़ी मूछ लगाने की जाके तो जरूरत तो नहीं पड़ी होगी या पड़ी थी? बिना मेकअप के जाता हूँ तो बाल यहाँ। बहुत एक्टर है जो दाढ़ी वाड़ी नथिंग, ये सब ऐसा बोलते हैं एक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से जाओ, कोई टेंशन नहीं होती। लोग ऐसे कहते हैं वैसे ही अच्छा लग रहा है, छुपा के रखो। और बस ये होता है कि फिल्म वहाँ चल रही थी, लोग इधर घूम के देख रहे होते बस। तो सारे बुरे सीन में मैं एकदम बोलता हूँ मैं यहाँ। तो what has been the reaction? किस सबसे अच्छा रिएक्शन क्या लगा? You know, इसी बात का दुख होता है कि कोई आदमी जाकर ऐसा पैन कर देता है किसी फिल्म को और हम जाके खुद देखते हैं तो हम भी डर जाते हैं। मतलब हम भी पढ़ते हैं और हमको खुद बिलीव होने लगता है कि अरे यार ये क्यों ऐसा लिखा, कुछ होगा। We went to the halls and honestly I'm telling you, और मैं I'm quite clear about, I'm very upfront. और जो चीज अच्छी नहीं होती उसको ना अच्छा कहने में कोई बुराई नहीं है। But there is 100% a feeling when you go and see the film in the auditoriums कि people are enjoying and laughing at the point they're supposed to laugh and enjoy. There is a last 40 minutes of the film which is meant to invoke a patriotic feeling without it being in your face. कि उठो बड़े चलो, it is just the same song, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने. And there is a pin drop silence and there are claps and there are people that they enjoy the fact that it's been done like this. पर थोड़ी मायूसी भी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद उस मायूसी के बारे में बात करेंगे। वो मायूसी ये है कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी लोगों ने टेलीविजन पे वो गाना देखा, गाना देख के इतने खुश हुए, लेकिन जब थिएटर पहुंचे वो गाना था ही नहीं। गाना क्यों नहीं था, कहाँ था, कितना था, कम था, ज्यादा था और क्यों था कम ज्यादा, उसके बारे में बात करेंगे आफ्टर द शॉट। स्टे विद अस, विल बी बैक इन अ मोमेंट, चैट सम मोर विद जुही शाह। और ये बताइए, फिल्म में जो इतना हाइप किया हुआ गाना फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वो फिल्म में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पीपल आर फीलिंग चीटेड। It's the title song. It isn't the titles. पूरे फिल्म के टाइटल फिल्म उसी से शुरू होती है। अच्छा। और फिल्म का जो आखिर पोर्शन है उसके अंदर हमने पूरा वही गाना उसके लिरिक्स चेंज करके, इट्स अ फुल सर्कल। ही स्टार्ट्स ऑफ विद दिस यपी स्टाइल एंड ऑल, जैसा टेलीविजन पे देखते हैं, और फिर एंड के अंदर वो पेट्रियोटिकली उसको पिक्चराइज किया। और शाहरुख फिल्म में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में ये कॉमन मैन के बारे में ज्यादा बोलने की कोशिश की है। कॉमन मैन सडनली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, द मैन नेक्स्ट डोर। क्या हाउ इज द कॉमन मैन प्लेस्ड इन योर फिल्म? ये फिल्म का जो पूरा नजरिया ये था कि हम ये फिल्म जो बनाएंगे कॉमन मैन के लिए बनाएंगे, और उसको ऐसा कुछ उसका जो हम हीरोइज्म भी दिखाएंगे वो एक कॉमन तरीके से ही दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि कॉमन मैन ने बंदूक उठा ली और 20 लोगों को मार लिया। इसलिए हीरो हीरोइन भी जो फिल्में हैं वो भी ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं आते कि बहुत हीरोइक नकली हीरोइज्म दिखाते हैं। फिल्म इज लार्जर देन लाइफ, कॉमेडी वाइज, एवरी विच वाइज इट इज लार्जर देन लाइफ। लेकिन व्हेन वी कम टू द सीरियस पार्ट ऑफ द फिल्म, उसके अंदर हर चीज बहुत ही नॉर्मल तरीके से, और मैंने भी जो एक स्पीच दी है फिल्म में, और जुही में एक झंडा लेके निकलते हैं कंट्री को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, तो उसमें ऐसा हीरोइज्म कुछ नहीं है। इट्स जस्ट द नंबर ऑफ पीपल। वी बिलीव द बिगेस्ट स्ट्रेंथ द कॉमन मैन हैज इन दिस कंट्री इज द फैक्ट दैट देयर आर सो मेनी ऑफ देम। दैट इज द लॉजिक, एंड इफ वी यूज दैट टू आवर एडवांटेज, कितने सारे कॉमन लोग हैं, हम सब कॉमन लोग जितने भी हैं, कॉमन लोग बहुत कॉमन है। एब्सोल्युटली, How beautifully said. सब लोग इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। हमारी जो स्ट्रेंथ है that can overcome any difficulty, any problem. मतलब don't have to believe in a politician, a leader, a hero like me, or a heroine like Juhi, or an anchor person like you. Nobody. Don't believe in anybody, or a presenter. Nobody. You just have to believe that you have so many number, and if you get together, you will 100% succeed. That was the logic. अच्छा, ये आखिर में जो भाषण था और लंबा सा बहुत खूबसूरत सा था कि मैं तो शैम्पू बेचता हूँ, या मैं ये बेचता हूँ, मैं शूटिंग बेचता हूँ, शर्टिंग बेचता हूँ, जो भी, और मैं तो आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, व्हाई यू बिलीव इन समथिंग लाइक दैट, व्हिच वाज डिलीटेड। क्यों काटा, क्यों आखिर में? एक्चुअली थोड़ा सा फिल्म का हमको लेंथ का लगा कि यू नो दैट वाज नॉट द इशू एनीमोर। वो बहुत अच्छा सीन था, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जुही और मैंने भी बहुत इंटरेस्टिंगली किया था। और पब्लिकली ऐसा कुछ लोग फैंस रोक के मुझको बोलते हैं कि अजय बख्शी वी लव यू, आई लव, एंड थ्रू आउट द फिल्म जब भी लोग ऐसा करते हैं तो मैं बड़ा पॉम्पसली उनको अजय बख्शी के टीवी, आई एम वेरी कूल एंड ऑल।
एंड थ्रू आउट द फिल्म मैं बोलता रहता हूँ आई लव कैट्स, और मेरे को नफरत है एक्चुअली जानवरों से, लेकिन मेरा पब्लिक इमेज ऐसा है कि माओं को और औरतों को और बच्चों को सबको अच्छा लगे, इसलिए मैं जस्ट गो ऑन टीवी एंड से आई लव कैट्स सबको। लेकिन आखिर में जब ऐसे वो लोग रोकते हैं और हम ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हम असलियत का और सच्चाई का साथ दे रहे हैं, तो वो बच्चे जब मुझे ऐसा बोलते हैं कि वी लव यू अजय बख्शी, आई सेड यू गाइस आर ऑल इडियट्स, मेरी तुम क्यों बात मानते हो? 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे शाम तक मेरी बात क्यों सुनते हो? क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं शैम्पू बेचता हूँ, मैं तेल बेचता हूँ, मैंने कोई सच्चाई की बात नहीं की, और मैं तो बेवकूफ हूँ ही, तुम लोग मुझसे बड़े बेवकूफ हो क्योंकि तुम वो बात को मानते हो। एंड देन जूही pushes me out, she says कि ऐसा नहीं, he's just angry or whatever, and I come back and I say it again, and I just want to tell you one thing to everybody here, I hate cats. So that's the whole, it was very funny in a way, and it was very, and it still hits, कि he accepts the truth and he wants public to know कि he hates cats. But he stands by the side of the truth. Yes, and now, Shahrukh, we come to the most awaited moment, which is, as you may be aware, that Sony Television is running a contest called Phir Bhi Dil Hai Hindustani Swatch Contest, and it's met with a fabulous response, naturally with Juhi and you in the film, जिसमें लोगों से ये पूछा गया कि वो खत के द्वारा ये लिख के बताएं कि इस फिल्म में शाहरुख खान का फेवरेट सीन कौन सा है. So now everybody is waiting with bated breath to know which is your favorite scene. So would you please tell them? You just say the first line of the scene. I'll tell you, this is the favorite scene, my favorite scene in the film. Okay. अजय, तुम ये 2 दिन पुराना केला खाओगे? 2 दिन से तो मैं इसे ढूंढ रहा हूँ. कुमार तो बहुत पहले था. तुम खाओगी? एक पर्सनल बात पूछूं? I think it's a lovely scene. तुम्हें जो पसंद है वो बनने को तैयार है. आदमी वो बंदर बनने को तैयार हूँ. आदमी पसंद है तो आदमी, और आदमी तो वैसे ही बंदर होता है. So anyway, that's the favorite scene of Shahrukh Khan in Phir Bhi Dil Hai Hindustani, where he says तुम्हें क्या पसंद है वो बनने को तैयार हूँ. And do you conform to such kind of romance where आदमी आगे बढ़ के कुछ भी ऐसा बोल देता है? What is your idea of romance and which is your favorite scene in the film? Juhi, जल्दी, बगैर हंसे बताओ. Okay. Right. My favorite scene in the film is really the portion where he makes his speech that comes towards the climax, where his whole speech is, it's not like loud and telling people, okay, come to the streets and help this man. It's almost, it's pleading with people that today, don't think that one of us does not make a difference. Come out, step out, and you'll see we will manage to save this one common man. Because this one common man, who we're talking about, Mohan Joshi, yes. It could be any one of us. Today he's in trouble. Tomorrow it could be you. It could be somebody in Bihar, in Bengal, in Bombay. No, Bihar. Okay, That's not for Bombay. That's for Bihar. Yes. Right. So this could be anybody's story, and today we want to help. So come out and be with us. Okay. And the last line is But this is it? She's praising me. Let us say the last. Okay, bolo. No, the last line is really my favorite. Is when he says कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ उन्हें बचाने, और अगर मैं मुड़ के देखूं तो मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं अकेला हूँ. And then he says, just please, and that's how it ends. So it's that's really wonderful. nice. That's a wonderful line. Do you ever write your line, Shahrukh? Please. आपने लिखा था. Shahrukh, you also said that you want to be the Sean Connery of India. Is Dreams Unlimited का next venture which is going to be a James Bond film? नहीं, मैं तो बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग मुझको ऐसी फिल्म बनाने नहीं देंगे. ये लोग क्या ओल्ड फैशन अजीज हो जुई, इन लोगों को मालूम नहीं है मॉडर्न सिनेमा क्या है. मेरा लॉजिक शॉन कॉनरी का ये था कि मैं अपनी उम्र प्ले करना चाहता हूँ. I like the fact that Mr. Sean Connery does that. Not the Bond part of it. I would love to be James Bond too. Yes. But my whole thing is कि मैं अभी 34 साल का हूँ, और फिर मैं वैसे रोल प्ले करने लगूँ जो मेरी उम्र के हो, क्योंकि काफी इडियोटिक फील करता हूँ मैं कॉलेज में बैठ के सब कुछ डेस्क के ऊपर और टीचर्स को. मैं आपसे दुगनी उम्र के लोग कॉलेज में जा चुके हैं फिल्म. I know it seems really strange to me. मेरे को बहुत awkward होता है कि ऐसा बैठा हो लड़कियों को छेड़ रहे हैं और टीचर्स को छेड़ रहे हैं. I don't want to छेड़ो लड़की. I want to go back home with them now. See, खतरे में. Shahrukh wants to take a break. I believe you want to take a break, and you make no bones about the fact that you're going to mend all your bones. You said somewhere that you're going for a very extensive surgery. Extensive मतलब दिया, my थोड़ी कमर नहीं टूटी प्रोड्यूसर बन के, कुछ पैर वैर में थोड़ी चोटें लगी हैं. So I have to go down and get it. वैसे प्रोड्यूसर हमेशा मुंह के बल गिरता है. हाँ, मैं जरा मेरा बैक साइड हेवी है तो मैं. Okay, what is the latest dream of Dreams Unlimited now? What is the one which you're dreaming now? क्या है? और उसमें शाहरुख होंगे, और शाहरुख से मैं पूछूंगा उसमें जूही होंगी, और if you feel like you use your veto power, have him out. Shahrukh out.
Watchman. Watchman. इनको बाहर ले जाओ. बाहर ले जाओ. We haven't really actually gotten You haven't started dreaming. down to नहीं अभी सोए नहीं हम. getting अभी हम down सब to हॉल्स the के बाहर next खड़े हैं जाके. No, really, it's too soon right now. We will. Within a week or 10 days, we will एक all महीना get actually down. we are going to sit down and close accounts of this and learn. Like जो हम ये कर रहे हैं, distributors के पास जा रहे हैं. एक महीना तक हम यही करेंगे. So we have sort of gained in some knowledge. And March onwards, we will start planning the next film. And hopefully, we will start writing it in a couple of months. Okay, great. And I sincerely feel that all of us here at Eminence, that despite whatever the critics have said, written, felt about it, your film is a huge and a roaring success. You have a role in my next film. Yeah, you are the hero of my film. Or SK or JC, let's have a song now from PBDH. जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जा. First of all, I must say that I saw the film many years ago and absolutely loved it. It said too many nice things to me. The title song itself was fantastic. The idea, the story. I loved everything about the film. I can't understand why it flopped. Maybe it was just ahead of its time. And about this interview. Shahrukh Khan is a class apart and this interview proves it once again. His thoughts about the film are so deep and amazing. And he is as charming and witty as always. Besides, it is very nice to see him together with Juhi Chawla. Their conversation is a great fun. What Shahrukh Khan said about Common Man was so right and well said. Thank you for watching, guys. I hope you enjoyed the video. Please, don't forget to like, share and subscribe. See you.